Hello, dear student. Welcome back in the second part of the model. In the previous one, we discussed can, could, may, might, and the remaining model will be discussed here in this video. Stay with us till the end of this video. Let's start with use of shall. Shall generally be used in simple future, with I and we, like I shall be 30 next year, or we shall go to Shimla in our holidays, and to express suggestion and proposal, right? And whenever you are expressing such examples, you will use your shall before the subject, like before, especially I or we se pehle, shall we go for a walk? Shall I help you in this matter? But here we can make some deviations in the rule, like whenever you are expressing your examples and your expression in promise जब व्यक्त करते हो तो थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, ही शी इट, यू आदि के साथ shall का यूज किया जाता है. जैसे you shall have your book tomorrow, and if you stand first you shall get a prize. And threatening and warning, the same way you will use with all these things. All the traitors shall be killed. If you remain absent, your name shall be struck off. And to expressing the order and command, you shall not disturb me, he shall leave the room at once. And for legal documents and regulations के लिए भी हम shall का use करते हैं, like every member shall pay 10 rupees per month. The tenant shall be responsible for all wears and tear. Should. The should is the past of shall. And in the reporter's speech, we will make use of should, like I said that I should win a scholarship. We said that we should go for a picnic. And expressing the advice, you should work hard. He should not waste his time, right? Should का यूज कर जब भी हम इस तरह से यूज कर रहे होते हैं, whenever we are doing such expressions, so there is no necessity and obligations. कोई आवश्यकता या दबाव नहीं होता है, right? लॉजिकल प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए वन शुड बी बैक फ्रॉम स्कूल नाउ. स्कूल से अब तक तो वापस आ जाना चाहिए था. द ट्रेन शुड हैव अराइव्ड बाय नाउ, कि अब तक ट्रेन आ जानी चाहिए थी. लेस्ट एंड इन केस ऐसा ना हो कि, इट मीन्स ओके के बाद हम ऑब्जेक्टिव या पर्पस को एक्सप्रेस करते हैं विद यूजिंग शुड, राइट? वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल. रन फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन. एंड टू एक्सप्रेसिंग द मॉरल ऑब्लिगेशंस, नैतिक उत्तरदायित्व क्या होते हैं? लाइक यू शुड हेल्प द पुअर, पुअर की हेल्प करो. वी शुड नॉट टीज एनिमल, एनिमल को टीज मत करिए. एंड लॉजिकल इन्फ्रेंसेस, तार्किक अनुमान, लाइक ही वर्क्स हार्ड, वो कठोर मेहनत करता है. ही शुड पास विद गुड मार्क्स, राइट? ही शुड बी हियर बाय नाउ. And such expressions whose completions, yeah, उसकी possibility of completion is almost nil, like if you should meet him, tell him his father is ill. Should you see the lion in the market, what will you do? मार्केट में अगर आपको लाइन मिलता है तो क्या करोगे? And use of should, use with that clause or with clause में भी किया जाता है. जैसे it is possible they should be present there. I don't know where I should find him. And the last one is with unfulfilled past obligations, like using with the should have and third form of the verb. Means इसमें आपकी जो पर्पज है वो पूरा नहीं होता है. लाइक यू शुड हैव हेल्प्ड मी, हेल्प कर सकते थे बट यू डिड नॉट हेल्प मी. दे शुड हैव लर्न द लेसन, लेसन आप लर्न कर सकते थे बट दे डिड नॉट लर्न. यूज ऑफ will be generally used with the second and third persons, like you, he, she, they, in simple future, like you will be a leader and they will come here on 15th August, like. And to expressing the intention, will and determination, there we can make some deviation in the rule where we can use will with I and we. I will and we will. Come what way, I will help you. I will attend your lecture in all conditions. And to expressing the polite request, offer and invitations, will का जो यूज हम कर सकते हैं, बट हियर वी विल पुट will in front of the subject. Subject से पहले आ जाएगा ये. Okay, will you lend me your book please? Will you take more tea? Okay, to expressing the habit and natural quality of a person's, like a dog will bark at the stranger, it is natural. An Indian will serve his guests, ये हमारी आदत है. एंड फॉर द प्रेडिक्शंस, किसी भविष्यवाणी को एक्सप्रेस करने के लिए, ही विल विन द इलेक्शन दिस ईयर, आई होप दे विल पास विद गुड मार्क्स. एंड एक्सप्रेसिंग द ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस, राइट? जनरली वी यूज सेकंड पर्सन, यू विल का यूज करते हैं. यू विल कैरी आउट हिज ऑर्डर्स, यू विल डू एज यू आर टोल्ड, भी जैसा आपको बोला गया है. एंड विथ ओपन कंडीशंस, लाइक मेन क्लॉज में, जैसे इफ यू वर्क हार्ड you will pass, this is the main clause here, you will. And they will help you, the main clause, if you go to him.
यूज ऑफ वुड, द वुड इज द पास्ट ऑफ विल, राइट। रिपोर्टेड स्पीच में बिल के पास्ट के रूप में हम कैसे इसको यूज करते हैं, लाइक ही सेड दैट ही वुड गो टू कॉलेज, शी टोल्ड मी दैट शी वुड हेल्प फॉर मदर। एंड टू एक्सप्रेसिंग द पास्ट हैबिट, गांधी जी वुड स्पिन ऑन हिज व्हील, व्हील के ऊपर वो स्पिनिंग किया करते थे। द कैट वुड सिट फॉर आवर इन वेट ऑफ रैट्स, ये इसकी आदत है कि वो घंटों चूहे के इंतजार में बैठी रहेगी। ओके, टू एक्सप्रेसिंग द पोलाइट रिक्वेस्ट, राइट, वुड ऑफ। ओके, सब्जेक्ट से पहले ही वुड का यहाँ पे यूज किया जाता है, लाइक वुड यू शट द विंडो प्लीज, वुड यू लैंड मी योर बुक फॉर अ डे। ओके, फॉर इन्विटेशन एंड ऑफर के लिए वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ tea, would you come with us, and expressing the wish in what, right, using would like I would like to help her in her studies, you would like to say that he is honest। and for preference को एक्सप्रेस करने के लिए वुड रादर का यूज करते हैं, लाइक आई वुड रादर डाई देन बैग, बैगिंग की अच्छा है कि मैं मर जाऊं। शी वुड रादर प्ले देन गॉसिप, गॉसिप से अच्छा है कि आप खेलो। मैंने वुड का यूज आप कंडीशनल सेंटेंस में भी यूज कर सकते हो, लाइक इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प द पुअर, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ट। यूज ऑफ मस्ट, must is very important, right? It expresses emphatic advice, like this question is important, you must learn it, you must see the film as it is very instructive। To expressing the duty and obligations, like we must pay taxes, you must keep to the left on the road। एंड फॉर रिटन ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए, लाइक रेलवे नोटिस है तो पैसेंजर्स मस्ट क्रॉस द लाइन बाय द ब्रिज, एंड स्कूल नोटिस है तो एवरी स्टूडेंट्स मस्ट पे हिज फी बाय 10th। एंड एक्सप्रेसिंग द नेसेसिटी एंड कंपल्शंस के लिए, ही वाज इल सो ही मस्ट कंसल्ट द डॉक्टर, आई मस्ट फिनिश दिस टास्क टुडे, वी मस्ट स्टार्ट नाउ। And such expressions we generally inner compulsion जब होती है, the pressing it by circumstantial necessity and moral obligation is that तब use करते हैं। and to using must for certainty and logical inferences, right? He must be in the house, the lights are on, he works hard, he must pass in first division, like works hard, शी मस्ट पास इन फर्स्ट डिवीजन में होनी चाहिए क्योंकि उसने काम किया है, ऊपर घर में होना चाहिए क्योंकि लाइट्स ऑन है। सो एक्सप्रेसिंग द डिटर्मिनेशन, लाइक वी मस्ट फिनिश आवर होमवर्क बाय 8 PM, आई मस्ट वर्क हार्ड टू विन द प्राइज। एंड फॉर ऑर्डर एंड कमांड के लिए, ऑल स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग देयर बुक्स, वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द स्कूल्स। and for provisions, right, provision especially, the things which is bad for legal point of view and for health, so we will use must not with it, right? You must not light a candle, the room is full of gases, you must not swim in this river, its water is dirty, right? For past possibilities, using must have, the third form of the verb, like man must have lived in caves in the past and they must have reached Mumbai by now। and using must have plus third form of the verb for such work which actually जो हुआ नहीं है, होना चाहिए था। you must have obey your parents but you did not and you didn't, and they must have attended the classes regularly but they didn't। need is a moral auxiliary। see, whenever we are expressing need in our sentences, that will be the negative and interrogative sentences, like lack of necessity, not need not का यूज करके, like it is Sunday, no, you need not go to school, you need not water the plants as it is raining। and to expressing the necessity, right, in form of questions, need we solve all the questions and all the questions, need they run fast to catch the train, need I attend the meeting, क्या ये सारा कुछ करने की हमें जरूरत है। ओके, need not plus have plus third form of the verb, ऐसे काम को व्यक्त करने के लिए जिसको करने की आवश्यकता नहीं थी but you did। okay, you need not have water the plants, look it is raining now, he need not have run fast, the train is late, I need not have attempted all the questions but I attempted all। okay, use of dare, the dare and need are almost same, they are regular verb and using in the modal, and as a model they are using with the negative interrogative sentences, and it expresses the lack of courage, right, absence of courage, like he dare not speak the truth, I dare not face the angry man, कि भी साहस नहीं है। okay, एंड साहस के बारे में पूछने, आस्किंग अबाउट करेज के लिए डेयर का यूज सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले किया जाता है, लाइक डेयर यू टच दिस हॉट वायर, हाउ डेयर यू इंसल्ट योर टीचर। used to is very important because it
expresses the habitual action in the past. Like when I was a boy, I used to think, मैं क्या सोचता था, that ghost live in the darkness. Before he went to England, he used to live in Delhi. कहाँ रहता था? दिल्ली में रहता था. And expressing the existence of things in the past, there used to be a tree on the bank of this river के किनारे पर tree हुआ करते थे. A temple used to be there on the top of the hill, right? See, whenever you are expressing such things and whenever you are using ना used accustomed to की अवस्था व्यक्त करने के लिए used to का प्रयोग होता है, तो ऐसे used to से पहले is, am, are, was, were, become, get, have आदि शब्द आते हैं. Like I'm not used to such rude behavior, and very soon you will become used to walking here. Okay, next one is here ought. ought का प्रयोग सदा usually and always to के साथ किया जाता है, and it expresses the moral and social duty. Like we ought to serve our parents, we ought to help the poor, we ought to take pity on the unhappy, and to express the advice and suggestions, व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए सेम शुड की तरह इसका भी यूज किया जाता है. लाइक यू ऑट टू वर्क हार्ड टू पास एग्जामिनेशंस एंड यू ऑट टू कंसल्ट द डॉक्टर. एंड यूज ऑफ ought टू प्लस है प्लस थर्ड फॉर्म ऐसे वाक्यों को दर्शाने के लिए जो कार्य होना चाहिए था परंतु हुआ नहीं. लाइक वी ought टू हैव हेल्प देम बट वी डिड नॉट. You ought to have worked hard but you did not. That's it, dear student. That was your model here. So there are so many examples that you will solve yourself. Okay. That's it, dear student. That was your video on the model, and I hope that you have enjoyed and you have learned every aspect of the model, that how we express the possibility, how we express the permissions, and how we express the advice, consultations, ability, capacity of any persons here in this model. So, dear student, stay with me for the next video. Thank you. Don't forget to consult the first part of this video.